Srijni, you can start now. Good evening, everyone. Welcome to the introductory session of the Accessible Book Creation Volunteer Project. It is an initiative taken by the Enabling Cell of Vasanta College for Women, Rajghat, in collaboration with Saksham Trust. I now request our convener, Dr. Akanksha Srivastava, to proceed with her valuable session. Thank you. Yes. Yes, thank you so much, Srijni. So very good afternoon to all the students who are present here. And I'm so glad that you all have joined today. So this session, it's just going to be a very short session. And basically, this is just to give an introduction to the students about what this project is. So I will just give a small presentation and मैं कोशिश करूंगी मैं उसमें सारे पॉइंट्स कवर करूं उसके बाद अगर आप लोग की कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क देम बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ ओके so now what is the accessible book creation volunteer project so as you might have even read in the brochure हमारा जो कॉलेज है वसंता कॉलेज फॉर वुमेन हमने एक collaboration किया है with a New Delhi based non-profit organization that is known as Saksham Trust. सक्षम ट्रस्ट करती क्या है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्क करती है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज ओके एंड दिस प्रोजेक्ट इज आल्सो टेकन अप बाय द इनेबलिंग सेल ऑफ आवर कॉलेज व्हिच is also dedicated to working for students with disability in the college itself. So now Saksham Trust of course works for people with disability in general, but specifically उनका काम focused है towards providing technological solutions to people with visual impairment. Okay. So what exactly are we planning to do in this project? We plan to create a pool of accessible books ठीक है फॉर पीपल विद प्रिंट डिसेबिलिटीज प्रिंट डिसेबिलिटीज में कौन कौन लोग आ जाते हैं विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स कम इन प्रिंट डिसेबिलिटीज एनीवन हु कैन नॉट रीड अ प्रिंटेड book or a printed text right so like you if I ask you people and to answer you all can unmute yourself but how do you think do students or people with visual impairment या जो लोग blind होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं किताबें can anyone answer or would anyone like to answer any of the students I think the okay basic method yeah is by reading Braille scripts. yes braille is one yes anything else that you have seen or you might have heard or you think that they can access books or text in any other format Ma'am, okay maybe Ma'am, by through audio. yes audio audio softwares. books yes okay so that's very good so braille is of course one but for braille you need to learn braille and the problem with braille is कि वो books बहुत restricted हो जाती हैं फिर I mean there are very few publishers and actually no publishers have a this thing that they have to publish in braille so it is these organizations that convert printed books in braille so very few of the books get converted in braille secondly the problem is that like if you have seen braille it is very voluminous ठीक है तो हमारा अगर 5 लाइनें जितनी स्पेस में आती हैं उसमें ब्रेल की शायद सिर्फ एक लाइन या 2 लाइन आ पाती हैं एंड द प्रॉब्लम another problem with braille is that you can only print braille on or emboss जिसको कहते हैं on one side so those books become very voluminous right because we have books with both sides of the pages are printed while they will have books only with one side so it becomes very voluminous okay so that's one problem with braille now audiobooks again are very expensive I'm sure those who consume audiobooks जो human narrated audiobooks होती हैं they become very expensive because somebody has to sit and narrate the entire book so उसकी जो production cost होती है is very high and again it's very restricted number books that are available in audio format so now what is the other form in which people with print disabilities can consume books or texts so the
one format that is available is the accessible format. And again, I would like to just point out who are people with print disabilities. So it's not just people who are blind, it also includes people with learning disabilities like dyslexia, right? Even they have problems reading books, right? Or not just blind, even people with low vision, right? Even they find it easier to read books, or actually they can read books way in accessible formats, and they are easier for them to read and consume, right? Like many of us think that, oh, we are not blind, or we don't have low any type of visual impairment. But I'm sure everyone in your, I mean, in your house, everyone's house, you have your grandparents जिनको कि थोड़ा सा problem होती है देखने में, and because of which they find it difficult to read text as efficiently, जैसे कि a section of population whom we have nothing to do with. It's also something that is very useful for us in the future. Anyway, what are accessible books? Now we need to know that. अब आप कहेंगे कि accessible books, अगर मैं कहूँ कि these are digital books, right? So one of the formats could be that there are screen readers, there are, like many of you might have seen or stumbled upon this feature of accessibility in your phone, and there is a Google text to speech engine in there. So you might think that, okay, हाँ ये text को speech में convert कर देगा, and yes, that is exactly what that does. But now for screen readers to be able to read books as well as you can read a printed book, you need to have it in accessible format. Now you will say कि अब इसमें और पीडीएफ जो हम लोग जनरल ई बुक्स पढ़ते हैं किंडल की या फिर पीडीएफ्स में, इसमें और एक्सेसिबल बुक्स में क्या फर्क है? फर्क ये है कि जैसे कि आप जब पीडीएफ्स डाउनलोड करते हैं या जब ई बुक्स डाउनलोड करते हैं, तो नॉट ऑल ऑफ देम हैव heading by heading, the headings are not as such separated. Now when you are reading a printed book, how do you know what is a heading? Can somebody answer? आपको कैसे पता है कोई चीज हेडिंग है? जैसे अभी यही पावर पॉइंट का स्लाइड लगा है, तो हाउ डू यू नो व्हाट इज द हेडिंग एंड व्हाट इज द टेक्स्ट दैट कम्स अंडर द हेडिंग? It's generally in capital and in bold letters, and the letter size is larger than the usual text. Yes, yes. So these are all things that you can see, right? अब वो bold है, वो भी आपको दिख रहा है, वो बड़ा है, वो भी आपको दिख रहा है, वो underlined होगा or something like that. You can see all of those things. You need to see all of those things. So somebody who cannot see, how do you think will they understand if it is a heading or not? Now any PDF book you might say is a digital book, right? So any screen reader should be able to read it, but the screen reader will not be able to tell you that this is a heading or this is the subheading, and all of these things. So when we create accessible books, they come with these features, right? Many of the screen reader softwares that are meant for people with low vision and blindness, they have a program or they have a feature where you can change the font size, the font color. Many people with low vision, they can read things better in when it is presented in a high contrast thing, like with a black background and a white text on it, or maybe a blue background and an orange or a yellow text on it, right? So it becomes easier for them to read those things. Or if they can just increase the font to a very very large thing, now that you will not be able to do in your normal PDF books, that only a proper screen reading app will be able to do, which is meant for people with disabilities or print disabilities. अब वो फॉर्मेट्स जो होते हैं, वो जो एप्स होते हैं, वो सिर्फ ये एक्सेसिबल फॉर्मेट्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं. सो जैसे वन ऑफ द एक्सेसिबल फॉर्मेट्स इज कॉल्ड डेजी. ओके, इट्स अ डेजी फॉर्मेट और अ डेजी बुक्स जिनको हम कहते हैं. तो उनमें ये सारे फीचर्स इंक्लूडेड होते हैं. दे हैव हेडिंग्स, यू कैन नेविगेट हेडिंग बाय हेडिंग, द you can navigate like sentence by sentence. For example, if you are reading a book for you're preparing for your exam, आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपने एक डेफिनेशन पढ़ी, राइट?
Now you want to learn that definition, so of course you will want to read that definition again, right? Or you read a sentence and उसमें कोई एक ही term आया आपके, कोई बहुत ऐसा एक concept का कोई term आया जो कि आपको याद करना है या जिसको कि आपको note down करना है. So now what will you do? You will just go back and read the line again, or you will just look up and read that a word again and note it down. But if you are reading, like if a screen reader is reading a PDF, what it does it, या तो वो पूरा पेज, एक पेज जितना होता है वो पूरा एक बार में पढ़ देगा, या फिर वो एक पैराग्राफ को पूरा एक बार में पढ़ेगा. तो फॉर एग्जाम्पल, if I am somebody who is using a screen reader and I come across a definition which is in the first line of the paragraph and I want to reread it, I'll have to wait for that entire paragraph to get over and then maybe navigate back to the previous paragraph. Or if it is there in the center of the paragraph, if that line came somewhere in the middle of the paragraph, I'll have to again go back and read the entire paragraph. And that doesn't serve the purpose of me learning that definition or me looking up that key term, right? So again, जो accessible books होती हैं उसमें ये navigation की features होते हैं जिसमें आप sentence by sentence navigate कर सकते हैं. You can go to the previous sentence, you could go to the previous word, you can even navigate character by character. For example, मेरे कोई word मिला and मुझे उसकी spelling जाननी है. Now my screen reader is just reading it out to me, right? तो वो तो ऐसे है जैसे कोई मुझे पढ़ के सुना रहा है, जैसे ऑडियो बुक्स होती हैं. अब ऑडियो बुक्स में आपको ये फीचर नहीं मिलता है, ऑडियो बुक्स में आपको ये फीचर नहीं मिलता है कि you can reread a sentence or you can get the person to spell it out to you, right? So again, in accessible books आप character by character navigate कर सकते हैं and you will be able to do all these things. Also, in addition, we have images in our books, right? हमारी books में diagrams होते हैं, हमारे books में pictures होती हैं, photographs होते हैं. Of course, somebody who cannot see cannot access the information, like cannot access it visually. But does that mean that they cannot or they should not get the chance to access the information in the picture? Of course not. So again, these are books which have all text, ठीक है, जिसमें कि pictures का description या images का description available होता है. Okay, so these are what accessible books are. So now coming to what is the accessible book creation volunteer project. So now our college has signed up or is in collaboration with this organization, this non-profit organization, and basically what we have done is हम लोग एक project run कर रहे हैं in which we have selected 5 books of our own syllabus. ठीक है, हमारे जो कॉलेज में BHU के जो सिलेबस में किताबें चलती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उसमें से हमने 5 बुक्स सेलेक्ट की हैं और उन 5 बुक्स को सक्षम ने एक्सेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है. अब जब बुक को आप प्रिंटेड बुक को एक्सेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो इट्स बेसिकली द प्रोसीजर इज कॉल्ड OCR. आप OCR करते हैं, आप स्कैन करके उसको एक डिजिटल फॉर्मेट में लेके आते हैं. नाउ इन द स्कैनिंग प्रोसेस मेनी अ टाइम्स इट माइट हैपन दैट देयर इज सम स्कैनिंग एरर, कुछ गलत उसने स्कैन कर लिया, ये हो सकता है. दूसरी बात, स्कैन करने में वो ऐसा तो है नहीं कि हेडिंग्स को आइडेंटिफाई कर लेगा या फिर पिक्चर्स को डिस्क्राइब करके और टेक्स्ट फॉर्म में लिख देगा, तो वो सब नहीं होता है. सो फॉर दिस दे नीड वॉलंटियर्स, ठीक है, जो कि उनके हेल्प कर सके इन proofreading of the book. Proofreading is basically where you are checking कि जो printed text book में था टेक्स्ट वही यहाँ पे exactly वैसा ही आया है कि नहीं. exactly वैसे का मतलब जो content है वो वही है कि नहीं, spelling सही है कि नहीं, punctuation सही है कि नहीं, जहाँ paragraph change हो रहा है वहाँ paragraph change हो रहा है कि नहीं, heading के अंदर जितना text है वो पूरा आया है कि नहीं, all of that. Then you provide the headings और आप उसको हेड फॉर्मेट करके उसकी हेडिंग लेवल बनाते हैं ताकि जब स्क्रीन रीडर उस एरिया पे जाए या उस टेक्स्ट पे जाए जहां पे हेडिंग स्टार्ट हो रही है तो इट रीड्स आउट हेडिंग लेवल 1 एंड देन व्हाटएवर द हेडिंग का टेक्स्ट इज. ठीक है, इमेजेस या पिक्चर्स या डायग्राम्स को डिस्क्रिप्शंस देते हैं. ठीक है,
it might not describe the entire thing, but yes, if like there is a history book and it has an image of maybe some ruler, then you can just provide that this image is of this so and so king or queen, right? So that is there. ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के लिए इन्हें वॉलंटियर्स चाहिए, एंड फॉर दैट वी और आवर स्टूडेंट्स will be working as volunteers. So now what are the benefits of working as a volunteer in this program? So of course the first benefit is that you are getting to work in a volunteering setting, जो कि हमें अक्सर नहीं, ये चांसेस या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं ड्यूरिंग आवर academic years, right? Because we are so busy in our studies and हम कहीं जाके वॉलंटियर नहीं कर सकते हैं किसी चीज के लिए, इसलिए हमें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, या फिर कुछ कुछ वॉलंटियरिंग चीज में कोई बहुत स्किल चाहिए होता है, तो आपके पास क्योंकि वो स्किल नहीं है तो आप वो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आपको एक बहुत छोटी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, इसमें बेसिक फॉर्मेटिंग स्किल्स आपको सिखाए जाएंगे, जो कि आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने में चीजें इंक्लूड करनी होंगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी असाइंड। सक्षम का अपना एक पोर्टल है जिसपे कि वो क्या करते हैं, द ओरिजिनल PDF form of the book, जो कि मतलब बस basically it is the scanned page or the picture of the pages of the book, and on the other side is the OCR या फिर जो भी उनका accessible format में किताब बन के आई है, ठीक है। एंड जो volunteer होते हैं वो साइड बाय साइड दोनों को कंपेयर करके सिंपली उसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने घर पे बैठ के ये चीज कर सकते हैं, और if you don't have a laptop or a computer at your home, you can even come to the college library and go to the computer center and do this. So basically you don't have to go anywhere for this, you can do it whenever you feel like, at if you're doing it from your home, you can do it in the evening, and it is not a very big task. अब आपको ये लगेगा कि यार पूरी किताब फॉर्मेट करनी पड़ेगी क्या, पूरी किताब को हमें करना पड़ेगा, so ऐसा नहीं है। what we do is we divide the book amongst our volunteers. So for example, I have a book which has 200 pages, ठीक है, और मेरे पास 5 वॉलंटियर्स हैं, ठीक है, तो मैं पांचों वॉलंटियर्स को 40-40 पेजेस दे दूंगी, ठीक। को 10 पेजेस को पूरा प्रूफ रीड करने में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता, एंड दैट इज ऑन एन एवरेज, सो लाइक इंक्लूडिंग द स्लोअर पीपल हु डू इट क्वाइट स्लोली, ठीक है। तो 1 घंटा आपको अगर 10 पेजेस करने में लग रहा है, तो 40 या 50 पेज करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे या 6 घंटे लगेंगे। सो विद इन 5 or 6 hours you are completing your volunteer work. So it's not like it's a time bound commitment कि आप 1 महीने के लिए कहीं पे किसी NGO के साथ कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं, तब आपको जाके उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट 5 or 6 hours का काम है and you are done, ठीक है। So that is the first thing, you're getting a chance to volunteer. Of course, as a result of that, ultimately Saksham will be providing you with a certificate of volunteering, ठीक है। And nowadays you know that whether you go for jobs, whether you go for further education after your graduation or your post graduation, all of these extracurricular things that you did besides your studies count a lot. They add a lot to your profile, right? So that certificate will, and this is not just a general charity work that you did, that you donated something over there. You are actually doing skilled volunteering work over here, okay? And you will be able to see the results while you are in your whatever course you are in, because I'm assuming यहाँ पे सारे first years के students हैं, तो अभी 2 साल तो आप हमारे साथ हैं ही at least. So within that time you will be able to see the result of it, that yeah, see, I contributed to the creation of this book, and now this is available on a public library for people with visual impairment or print disability. So that's a very good thing. Of course, you're also getting a chance, to learn some key document formatting skills. ये जो फॉर्मेटिंग आपको करना अभी यहाँ पे सिखाया जाएगा, ये कोई ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए कोई अलग सॉफ्टवेयर या कोई अलग ऐप डाउनलोड करना होगा या ये कोई अलग टाइप की चीज। इट्स बेसिकली गूगल डॉक्स या फिर MS वर्ड पे हम जब
यूज करते हैं, तो उसी में जो फीचर्स हैं हेडिंग्स प्रोवाइड करने के या ऑल टेक्स्ट डालने के, ये सारी चीजें करने की, ये आपको इनको ही यूज करके इन बुक्स को फॉर्मेट करना है. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज यू लर्न टू डू दीज थिंग्स एंड दे आर वेरी गुड even for your own future. When you are making documents, when you're making reports or something like that, it's always good if you have these skills. After all, they are there for everyone, right? It's not just there for people with print disability. So that's a very nice opportunity. Now, how will you volunteer or what are the steps? So abhi jo hum kar rahe hain, now this is today is of course just the introductory session. ठीक है. Now, after this slide, I will be showing you a slide जिसमें कि एक Google form का link होगा, and one of my students will even be posting it in the chat box of the Google Meet ये meeting हमारी जो चल रही है, and even in the YouTube live वाला जो session है उसके भी comments में she'll be posting it. ठीक है. So you can just click on that form and fill it up and submit it. ठीक है. ये फॉर्म सबमिट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल you are registering for the volunteering and you will have to do it. No, by filling this registration form जो आज की मीटिंग में शेयर होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेनिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं. ट्रेनिंग जो कि हम प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में कभी ऑनलाइन 1 घंटे करने वाले हैं. ठीक है. इट विल बी ट्रेनिंग ऑफ 1.5 आवर्स जो कि हम जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू ही करने वाले हैं. सो अगेन, ट्रेनिंग भी अटेंड करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, और ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बहुत पढ़ाई के बीच में, क्लासेस के बीच में वो ट्रेनिंग. इट विल जस्ट बी 1.5 आवर की ट्रेनिंग ऑन एनी ऑफ द डेज टुवर्ड्स अराउंड दिस टाइम ओनली, एंड ऑनलाइन मोड में. ठीक है. तो आप जो आज registration form भरेंगे, that is simply for signing up for the training. ठीक है. Once you attend the training, once you are registered, then we will contact जो भी हमें register हमारे साथ आज register करेंगे, हम उनको contact करेंगे कि ये training का date है, ये training का time है और ये training का link है. When you join the training, you can understand the entire process. Somebody from Saksham, the project manager over there, she will be teaching the entire thing. वो पूरा बताएंगी, वो पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगी कि कैसे आप पोर्टल पे साइन इन करेंगे, कैसे आप बुक को डाउनलोड या जो भी करेंगे गूगल डॉक्स खोलेंगे, एंड कैसे आपको हर एक चीज करनी होगी. सो शी विल बी एक्सप्लेनिंग द इंटायर थिंग स्टेप बाय स्टेप. Once you attend the training, then there will be another Google form. ठीक है. तो उस दिन जो बच्चे ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद जिनको लगता है कि हाँ यार ये तो हम कर सकते हैं एंड ये हमें करना है, वो उस गूगल फॉर्म को भरेंगे और हम सिर्फ उन्हीं को काम असाइन करेंगे. सो आज आप जो गूगल फॉर्म भरेंगे उससे आप ये बिल्कुल मत सोचिए दैट ओ नाउ आई विल बी बाउंड टू डू इट एंड आई एम नॉट इवन श्योर इफ आई विल बी एबल टू डू इट. अभी तो हमें इतना क्लियरली समझ ही नहीं आया है कि करना क्या है. Don't worry about it. If you feel that yes, I want to do this, I want to participate in this volunteer project, and लग तो रहा है कि हम कर लेंगे, तो आज का फॉर्म भर के बस ट्रेनिंग अटेंड करो. ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद अगर आपको लगता है that yeah, I still think I can do it and I really want to do this, then you can again register with us for the proper volunteer work. ठीक है. Once that happens, we will be assigning the volunteer work to you. ठीक है. वही सक्षम के पोर्टल पे आपको वॉलंटियर वर्क असाइन होगा एंड वी विल गिव यू सम टाइम. अभी आपकी वेकेशंस भी आने वाली हैं तो आपके पास काफी टाइम है. ऑफ कोर्स वेकेशंस नहीं भी हैं तो आपके पास एग्जाम्स अभी नहीं आ रहे हैं, तो इट इज अ वेरी आइडियल टाइम फॉर यू टू do this thing, right? So you can then complete the work, and after completion of the entire work you will be getting a certificate from Saksham, right? So within a month we will be able to do this and you will get your certificate, and you will be also getting the results in front of you by seeing that you have contributed in a very good way. Okay. So this is the thing, and now this you can take a picture of this, you can note the link down, and I'll even request Atri and Shrijini to share the Google form links in the chat box and in the YouTube live comment section. ठीक है. तो आप लोग वहां से कॉपी कर सकते हैं, उसको क्लिक करके आप उसके ऊपर अभी चाहो तो भर भी सकते हो. इट्स अ वेरी शॉर्ट, बस आपकी बेसिक डिटेल्स हम मांग रहे हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए.
ठीक है, बस वो फिल करके यू कैन सबमिट द फॉर्म. And one more thing that I want to address over here is that यू मे थिंक कि अरे हमारी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो फिर हम इंग्लिश में बुक्स होंगी तो कैसे करेंगे. तो अगेन इट्स जस्ट प्रूफ रीडिंग. आपको किताब लिखनी नहीं है, या आपको किताब की ग्रामर या उसकी कोई चीज चेक नहीं करनी है. आपको सिंपली एक पेज देख के, एक इमेज देख के टेक्स्ट की, दूसरे टेक्स्ट को चेक करना है. सो बेसिकली आपको बस चेक करना है कि वो सही है कि नहीं है. ठीक है. Another question that you might have is कितना टाइम लगेगा. सो एज आई सेड, नॉट मोर देन 5 or 6 hours. ठीक है. बहुत स्लोली करोगे तो भाई 6-7-8 घंटे लग सकते हैं. अब वो 8 घंटे का काम या 6 घंटे का काम या 5 घंटे का काम आप जितनी जल्दी कर देंगे, आप उतने, आप एक दिन में भी कर सकते हैं, आप 2 दिन में कर सकते हैं, आप एक हफ्ता लगा सकते हैं वो करने में. That is, up to you. Of course, it doesn't mean that you're taking 2 months to complete the task, but yeah, you will be given enough time, but it will not be a very long term thing. It's not like you're registering as a volunteer once, तो आपको फिर हम बार बार कोई टास्क देते रहेंगे. आपको जो इनिशियली एक टास्क मिलेगा वही एक टास्क है, वही आपको करना है. आप वो टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा. ठीक है. सो आई होप एवरीवन who is there have taken a picture of this or have noted down this link. ठीक है. If there are any questions now, you can ask me. किसी के भी अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो. हेलो. यस. हाँ मैम, गुड आफ्टरनून. मैम, मुझे यही नहीं समझ में आया, मतलब ये है क्या, उसकी थीम क्या है और उसमें क्या कैसे करना होगा. बेटा ये एक वॉलंटियर प्रोजेक्ट है. समंता, आप माइक म्यूट कर लो. ठीक है. नाउ इसमें है क्या कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, वो किताबें, जैसे हम लोग प्रिंटेड किताबें पढ़ते हैं जो छपी हुई होती हैं, वो ऑफ कोर्स नहीं पढ़ सकते हैं. ठीक है. बिकॉज वो देख नहीं सकते हैं. तो उनके लिए हम किताबें, एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो कि कंप्यूटर्स या फोन्स पे जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं, मतलब जो उस टेक्स्ट को रीड करते हैं और रीड करके मतलब दे उस चीज को वर्बलाइज करते हैं, उस फॉर्मेट में हम किताबों को कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. तो आपको इसमें करना ये है कि अगर आप रजिस्टर करते हैं और आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, जैसे आप वॉलंटियर कर रहे हैं किसी चीज के लिए, मतलब दिस इज अ सोशल सर्विस काइंड ऑफ अ थिंग. आप अगर वॉलंटियर करते हैं इस चीज के लिए, तो फिर आप उस प्रोजेक्ट में, जो कि जिसमें कि हम किताबों को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड या दृष्टिबाधित लोगों के लिए मदद साबित हो सकती है, वो उस फॉर्मेट में आप उसको कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं. तो बेसिकली कंप्यूटर्स से आपको कुछ काम करना है, कंप्यूटर पे आपको कुछ काम करना है बेसिक. ठीक है. जैसे हम कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं, वैसे ही आपको कुछ काम करना है. ठीक है. टाइपिंग नहीं है, टाइपिंग हुई आपको मिलेगी, टाइप्ड किताब आपको मिलेगी. किताब को आपको बस या पन्नों को चेक करना है कि उस पे सही छपा है कि नहीं छपा है, वो सही टाइप्ड है कि नहीं टाइप्ड है. और थोड़ी सी कुछ और चीजें करनी होंगी, जैसे कोई अगर पिक्चर बनी हुई है तो उस पिक्चर को आपको, उस पिक्चर में क्या है वो डिस्क्राइब करके वहां पे लिखना होगा. ठीक है. ताकि कोई भी जो देख नहीं सकता है, वो जब वो किताब पढ़ेगा अपने कंप्यूटर के माध्यम से, तो आपने जो उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा वो उसको पढ़ के सुना देगा उसका कंप्यूटर, एंड सो उसको समझ आ जाएगा कि इस इमेज में क्या है. ठीक है. तो ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है, और ये काम करने के बदले में आपको सक्षम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे ये काम करने के लिए. ठीक है. यस, थैंक यू मैम. एनी अदर क्वेश्चंस? So I would just say, I think it's clear enough to everyone. If
एट ऑल यू फील दैट यू आर इंटरेस्टेड, आप देखिए इसमें बात बस इतनी है कि आपको सिंसेरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये टास्क दिया गया, अब जैसे मैंने 200 किताब पन्नों की किताब को 4 लोगों में अगर मैंने डिवाइड कर दिया है, उसमें से एक ने भी काम कंप्लीट नहीं किया, तो फिर वो किताब तो पूरी की पूरी, बाकी तीनों ने चाहे कितनी भी मेहनत से कितनी भी जल्दी जल्दी कर दिया, बट दैट बुक इज लेफ्ट इनकम्प्लीट। सो सिंसेरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी देयर। ठीक है, आप अगर साइन अप करेंगे, अभी तो फिलहाल आप बस ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको थोड़ा सा ये टाइम का रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफर्ट थोड़ा डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वो टाइम और एफर्ट देने के कंडीशन में हो, तभी आप इस चीज के लिए साइन अप करें। ठीक है, so if there are no more questions, then I think we can end this meeting over here, and those who want, they can register with us. Okay? Okay. ठीक है, so Atreyi, I think you can end the meeting. Thank you very much everyone. Thank you to Atreyi, Srijini and Mehtab sir. आप लोगों ने help की इसको conduct करने में. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ये सोशल एक्सपी डॉट कर दिया मैंने।